Can someone tell me which house is the house of cheating? If someone, who tells me today which house is the house of cheating, whenever I meet that person, will have coffee at Starbucks from my side. Which house is the house of cheating? सारे ही आ गए, 12, 11, 8, 12, 6, 8, और भी बोलो, 11th, 5th, 6th हाउस एंड मेरा 112 प्रोबेबिलिटी काम करेगी आज, आई डोंट नो. वेल, थर्ड हाउस शांतनु बोल रहा है. वाओ, थर्ड हाउस कहां से चीटिंग करेगा? थर्ड हाउस तो लड़ाई करेगा. सर चीटिंग करने का साहस तो वहीं से आएगा। अरे यार, चीटिंग करने के लिए साहस नहीं चाहिए होता, कमजोरी चाहिए होती. चीटिंग करना एक कमजोरी है. मतलब जैसे अगर चीटिंग ना वीनस करना होगा एक सर वहां साहस है. तो कमजोर होगा ना सर। अरे बेटा, चीटिंग ना करना एक साहस है. जिससे तो जिसने चीटिंग कर ली वो साहसी नहीं हो सकता. नहीं, अगर वीनस वहां बैठा होगा तो साहसी तो होगा ही नहीं सर। अरे लाइक बेटा, आई एम आस्किंग द हाउस, आई एम नॉट ओके डिस्कसिंग सर। व्हाट प्लैनेट इज सिटिंग देयर. ओके सर। I am discussing what house. There are two people who win coffee from me, and please remember them. And they are Vivek ji and Moninder. The sixth house is the house of cheating. Chhadava. Can someone tell me why? Why sixth house is considered the house of cheating? Because it is 12th from the 7th. Yeah. आपके विवाह को, आपके स्पाउस को बर्बाद करने वाला भाव छठा होता है. Cheating is seen from the sixth lord. So if the sixth lord sits in the Lagna, who will cheat? Sixth lord of Navamsha sits in the Lagna, you will cheat. If the sixth lord of your Navamsha goes in the 7th house, who will cheat? Your spouse will cheat. Whether you know it or you don't know it, they will be cheating. Cheatings are always very, very secretive. Sixth lord of the D9 goes to Lagna. You can cheat. You have tendency to cheat. If you have Jupiter Drishti, तो बच गए. Jupiter will not let you cheat. Any benefic Drishti, even Venus does not allow cheating. Shukra भी cheating नहीं करने देता. Shukra is a very devotional graha. You take it wrong. The planets who really force you to cheat are Mars. Mars will cheat. Rahu will cheat. Mercury will cheat. They will cheat. Chandra will cheat. Pakka. You know Chandra. Chandra will cheat. Sixth Lord in the Lagna, I always tell them when they come for matchmaking, भाई अपनी वाइफ को चीट मत करना. सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज की अभी हम बात नहीं करेंगे. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. उसके बारे में बात करूंगा हम आने वाले में. But definitely the sixth Lord will always remain the same, no? Sixth Lord is the sixth Lord. It's the Lord of the cheating. So maybe the first marriage, second marriage, third marriage, fourth marriage, cheating is cheating. Someone who has cheated someone in the first marriage may have tendencies. Only the dasha can save you. आपकी दशा अच्छी है ना, फिर आप चीट नहीं करोगे. आपको दशा अलाउ ही नहीं करेगी. समझ रहे हो आप मेरी बात? एक और प्रिंसिपल बताऊं चीटिंग का. देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ द चीटिंग. आई एम टेलिंग यू द प्रोमिनेंट. देयर कैन बी मेनी अदर, यार, मेनी अदर. Check the second lord of your birth chart. Check the second lord of your D1 and see that lord in the D9. If it is with malefics, you again have tendency to cheat. The second lord of the D1, suppose the second lord of the D1 is Venus. Check that Venus in your D9. If that Venus is afflicted, you have tendency to cheat. You have tendency and intelligence. जो अभी शांतु बात कर रहा था ना, intelligence. It's not prakram. You need to be little over smart and intelligent to cheat your spouse. You have no control over your kama. काम, क्रोध, मोक्ष, लोभ.
ये बुरा नहीं होता है, इट इज नॉट बैड। भगवान की बनाई हुई चीज बुरी थोड़ा हो सकती है। ना काम बुरा होता है, ना क्रोध बुरा होता है, ना लोभ बुरा होता है, ना मोह बुरा होता है, until and unless it is contained. If it is not contained, then it is bad.